wonderful Rashmi and Bedi. They are here finally. Good to meet them. Um, they are single-handedly responsible for making this evening happen. I want to thank Welcome to Glam and Shine with Rashmi Bedi. My guest today is an entrepreneur, content curator, filmmaker producer, music video and ad film director, and an expert in intellectual property creation, brand development, amplified times, and Republic music. We represent one and only Varun Gupta. Welcome to Hello, the Rashmi. show, Varun. How are you? Good to see you after good 2 years. Same here. Thank you so much. And firstly, I would like to thank you on behalf of our viewers all over US and Canada who are watching the show. Thank you so much for being part of our show and sharing your journey with our viewers. Thank So, you very much. Then it's an iconic day for you guys in USA, and congratulations for the new president. thank you so much. It's a new start, of course. It's new start of a Right. new chapter, of course. So, thank you Definitely. so much. एंड वरुण आपके बारे में तो बहुत कुछ है जानने के लिए जैसे कि मैंने अपने व्यूअर्स को बताया अपने इंट्रोडक्शन में आपके बारे में कि क्या कुछ नहीं कर रहे हैं आप सो वरुण हाउ इट स्टार्टेड लाइक हाउ योर जर्नी स्टार्टेड हाउ यू वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री आपको बचपन से ही शौक था बचपन से ही बच्चन साहब की पिक्चरें देखा करता था और अपने दोस्तों के साथ म्यूजिक जैम करा करता था ओके एंड मुझे याद है कि मेरा मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है जो इस समय आर्मी में इज अ मेजर इन आर्मी मैं और वो बिल्कुल नेक्स्ट डोर रहा करते थे और हर शाम को हम टेरेस में जाके जैम करा करते थे दैट इज वेयर द म्यूजिक स्टार्टेड हैपनिंग इन मी एंड आई थिंक मैं सेवेंथ स्टैंडर्ड में था एंड माय ब्रदर वेंट टू नेपाल और वहाँ से मेरे लिए वो एक कीबोर्ड लेके आए थे जिसको मैंने आई स्टार्टेड लर्निंग it and with my friend Raj who's a major in the army we started jamming so music started happening ओके and बोलते हैं ना कि वो music is a route for everything which you want to expand in life so धीरे धीरे वहाँ से journey start हुई and then uh, creatively I've always been a part of beat the process of बोलते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे मोहल्लों में जगराते हुआ करते थे जी जी तो उन उनके प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होना फिर वहां ओके पे नो उनको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करना फिर छोटे छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना सो दिस इज हाउ आई थिंक माय जर्नी टू द क्रिएटिव वर्ल्ड स्टार्टेड एंड when I was in school, I was in this in the music choir, ओके and I used to win a lot of trophies for my school when it comes to music. वाह So वो मेरा passion था और मुझे पता था कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जरिए बोलते हैं ना छोटे से शहर में हम लोग रहते थे जी और मतलब आज भी देहरादून एक बहुत छोटा शहर है हालांकि सुनने को बहुत बड़ा लगता है बट म्यूजिक हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज इन 1956 Beatles came to Rishikesh, या and because of them, it became the music hub. Dehradun Rishikesh is adjoining, and so the kind of music started happening here, the kind of rock culture we started happening here, the kind of pop culture. Because मुझे याद है जब आर्यंस बैंड हुआ करता था उनका गाना था आंखों में तेरा ही चेहरा सो डीजे नारायण was here in Dehradun. He was a professor in music here and a lot of people who've been from Dehradun. So Dehradun का म्यूजिक बहुत ज्यादा कल्चरली स्ट्रांग माना जाता था बिकॉज यहाँ से बिल्कुल बहुत सारे रॉक स्टार्स म्यूजिशियंस पैदा हुए हैं और आई एम लकी आई एम वन ऑफ देम एंड देन आई स्टार्टेड अ बैंड या यू हैव एंड योर ओन हम लोगों बैंड ने 2007 का इंडियन क्रिकेट काउंसिल के लिए राजेश शुक्ला जी उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे आईसीसी के तो उनके लिए हम लोगों ने वर्ल्ड कप का गाना बनाया मतलब वो मेरा
पहला एक step था which took me to the international platform, where we went to the West Indies to perform for the opening ceremony of Wow, ICC. And that's a मतलब proud एक छोटे से moment. शहर से Yeah. वहां जाना, फिर जो वीडियो भी बना था, उस वीडियो में कुछ 26 आर्टिस्ट थे बॉलीवुड के, तो मतलब द स्टार्ट itself happened in a great way. And trust me, Rashmi, I did not have had a single penny. you know how it all happened, how a project worth 1 crore rupees happened in 2006, and from there Wow. till now the journey has been commendable. I think i'm I'm thankful that whatever I've achieved and whatever I could manage to get in my life till today, it's been a commendable journey. Amazing, and I'm glad your graph is just getting higher and higher day by day. It's great, and I really want कि ऐसा ही चलता रहे. और आपसे जान के, आपकी बातें सुन के, of course हमारे viewers को भी बहुत energy आ रही होगी, and they must be getting so much of positivity from you that how nicely you have told and done your journey for yourself. Because आपने जिस हिसाब से बताया बहुत आसान लग रहा है सुनने में, but I know इसके पीछे आपकी बहुत मेहनत है. You must have worked very very hard to achieve everything. So, हाँ मतलब yeah, जी, मुझे 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 आज भी याद है कि बॉम्बे के बारे में जब हम बात करते थे, जब हम इंडस्ट्री की बात करते थे, तो मेरी दादी मेरी दादी अम्मा और मेरी मम्मा, जी, जो अनफॉर्चुनेटली दोनों ही आज इस वर्ल्ड में नहीं है, जी, वो बोलते थे कि मतलब वो तो 7 समुंदर पार है। जी, मतलब इट वाज लाइक अ सिटी which was just there in the dreams. और मुझे भी नहीं पता था कि वो मंजिल कैसे हम लोग पाएंगे और उधर उधर कैसे जाएंगे। बट इतना जरूर पता था कि लोग सपने देखते हैं और आंख बंद करके देखते हैं। मैं आंख बंद करके सपने नहीं देखूंगा, मैं आंख फूल के खोल विजन के बनाएंगे. विजन्स बनाऊंगा Yes, और उस विजन्स को लिखता रहूंगा। और कहीं ना कहीं जब आप पूरी शिद्दत से किसी चीज को दिल से लिखते हैं, तो यूनिवर्स ना it brings it back to you. मतलब somewhere it's all about spreading बिल्कुल, बिल्कुल. what you wish to do in life. So I have seen the artistic side, where I've performed more than 200 gigs as an artist when I had this long hair and I used to perform, I used to sing, I used to compose. And now at the other side of it also I've seen, I think एक लाइफ में इतना सब मिल जाना is nothing less than a blessing, which my mom sitting up there is doing for me. Otherwise, जिस जगह से मैं आता हूँ, जिस घर से मैं आता हूँ, एक मारवाड़ी फैमिली से आना और एक लो मिडिल क्लास फैमिली से आके इतना सब कुछ अचीव कर जाना, ये I think this is like an overnight dream which people watch it. But I'm very happy that I somehow uh, managed to graph it properly, craft it properly, learned it properly, and then execute it for myself. एब्सोल्युटली वरुण, बिकॉज कोई भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा जब बनना चाहता तो दे आर रियली स्केर्ड एंड दे रियली लुक फॉर अ गॉड फादर, लाइक कोई साथ में हो, कुछ सपोर्ट हो. बट आपने अपनी मेहनत से अपने आप को प्रूव किया और अपनी एक खास जगह बनाई है. एंड ऑफ कोर्स यू आर अ रोल मॉडल इंस्पिरेशन फॉर अदर्स की अगर मेहनत करें और अपनी जगह बनाई जा सकती है इंडस्ट्री में. ऐसा नहीं है, यू कैन मेक योर ऑन स्पेस, योर आइडेंटिटी एंड इंस्पायर सो मैनी ऑफ कोर्स. बिकॉज लोग घबराते हैं आने में कि नहीं जगह मिल पाती, बट आपने उसे गलत साबित कर दिया है. एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू वरुण. सो रश्मि, वरुण, पाकिस्तान का एक बैंड हुआ करता था, जुनून। जी, जी, और जब मैं जब जब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा था, जी रहा था, तो उनका उनका एक गाना था सईयो नहीं, और उसी एल्बम में एक गाना था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा बता क्या है। क्या बिल्कुल. मैंने उस गाने को जिस तरीके से सुना, आई थिंक दैट सॉन्ग चेंज्ड माय लाइफ. सो समवेयर डाउन द लाइन, या, there are two people who played a very important role in my life. One is Jerry Venture, who's one of the biggest Hollywood producer, who या, started his journey as an agent of Elvis Presley and then became one of the biggest producer. या. जब मैंने उनकी biography पढ़ी, when I stop talking you will know I'm dead, and then this particular song which changed my life. So it's all about understanding the vision, and it happened. Absolutely. And it's all your hard work and determination, of course. That is so true. And I also believe that road to success is hard to navigate, but with hard work, determination, and passion, we can make our dreams come true.
and that's what it is. So tell me one thing, like you're a director, so have you done any course या किस तरह से आपने किया? Because बहुत से लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे एंटर किया जाए, क्या करना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है. So what all you are being doing? So have you done any course or it's all your experience? सी मैंने मैंने अपनी लाइफ के जिस एज पे या जिस सिनेरियो पे आई चोज टू बी अ डायरेक्टर, Mm-hmm. it was it was a time when there were a lot of challenges to me, a lot of responsibilities to prove myself. When I shifted to Bombay, I was a media professional. Right before this, I was working with one of the biggest publications as the vice president, looking after brands and marketing. From there, living the city, the capital of India, and then going to the financial capital of India was a different scenario for me. What happened is a lot of experience. I started watching a lot of film. मैं हर film जब देखता था, मैं हर एक फिल्म को देखने के बाद एक थीसिस लिखता था Mm-hmm. कि मुझे उस फिल्म में क्या अच्छा लगा, क्या होना चाहिए था. मैं हर फ्रेम को देखता था कि इसको शूट किया गया है तो किस एस्पेक्ट से शूट किया गया है, इसकी लाइट कैसे है, इस सीन पे क्या क्या हुआ है. बिकॉज अगर मैं 3 साल फिल्म मेकिंग पे देता तो मैं शायद मतलब आई कुडंट हैव मैनेज टू डू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ. बट इट वाज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल जर्नी फॉर मी, and a lot of learning from what I did, because I started working as a creative director for a Mm-hmm. lot of non-fiction shows. So I Okay. started living behind the camera. Okay. Then I started understanding what you know fiction and non-fiction is. There are two kind of a world, Yeah. and when you start learning things, it Mm-hmm. happens. जो मुझे पहला ad film भी मिला करने का, जो Okay. which the way I tried doing that ad film was very realistic, and I got a lot of applause for it. So मुझे लगा कि rather than choosing a path which is a path of following someone else, I'll create my own path and create my own journey. जितना टाइम लगेगा लगेगा, बट मेरी एक खुद की पहचान होगी कि जब जब किसी को इस तरीके की फिल्म मेकिंग चाहिए होगी, they will contact me, or Okay. they'll reach out to me. So my thing started with uh, a lot of practicalities and a lot of studying. मुझे ऐसा जरूर लगता है कि अगर मैंने इनिशियली ये सोच लिया होता कि मुझे फिल्म मेकिंग करनी है, और मैंने राइट आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने मास्टर्स करने की जगह मैंने फिल्म मेकिंग की होती, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता. आई वुड हैव बीन कंफ्यूज्ड इन माय लाइफ. Yeah. Because I did masters and I did a publication journey, I started knowing the world. I advertisement companies like Ogilvy, Lintas, JWD, these were my agencies. तो यहाँ से जितना सीखने को मिला, it changed my life. So wherever I am, whatever it is, still today also, हर रोज उठ के मैं एक फिल्म देखता हूँ and I make a note, and हर रोज सोने से पहले मैं एक फिल्म देखता हूँ and I make a note, and that is something which helped me learning the processes. Wow. So you are doing so many things, director, producer. So you think it's like a stressful thing or you really enjoy? Because आपको देखने से तो आपको लगता है कि गुस्सा भी नहीं आता होगा. बहुत तो बहुत आता है, बट मेरा मैं रश्मि जी, मेरा मेरे साथ है कि I think the kind of person I am, the kind of evolved I am with myself, the only thing which you know which gets me annoyed is I can't digest a fact of people pretending something else which they are not. Yeah, I think मुझे लगता है हम लोग बहुत छोटी सी जिंदगी जीते हैं, बिल्कुल. हम लोग बहुत सिंप्लीफाइड लाइफ जीते हैं. हम जो हैं जितना है उतना ही हमें आई थिंक द लेस यू स्पीक एंड यू लेस यू प्रेजेंट अबाउट योरसेल्फ. जैसे मैं फॉर एग्जांपल द बायो व्हिच I sent you, it was like around 100 words. I could have written 1,000 words also. So true. But the more of conversation which you do, the more of conversation which you get into, is more realistic than pretending. So मेरे से ना वो होता नहीं है, और मैं उस तरीके के लोगों को डाइजेस्ट नहीं कर पाता हूँ. I can count people who are there in my life and I'm very happy with it. Rest it's all तो मुझे लगता है उस जगह पे I get a little मेरा temperamental issues है. Otherwise I'm a sweet person to work with. Yeah, and how you maintain to be so grounded? You're such a simple person. आपने इतना कुछ achieve किया, but you're such a simple person. It's very impressive.
मैं आपको ना एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन बताता हूँ। बिल्कुल। मैं बच्चन साहब के साथ जब काम कर रहा था, मतलब बचपन से सपना था उनसे काम करने का। मैंने उनके साथ 1.5 महीने कॉन्वर्सेशन, मुझे मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उनके साथ डायरेक्टली 1.5 महीने कॉन्वर्सेशंस करूं। मैंने मेरी उनके साथ बहुत सारी कॉल्स हुई हैं, बहुत सारे मेल्स एक्सचेंज हुए हैं, बहुत सारे मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं। और एक दिन एक ऐसा कॉन्वर्सेशन था कि हम जब ये गाना कर रहे थे गुजर जाएगा, तो सर ने मुझे, मैंने सर को जब गाना भेजा, तो सर ने मुझे लिखा कि आई थिंक माई नरेटिव शुड बी ऑल together in the top of the song rather than divided into two parts. या And I said, sir, 100% as you say. But then I said, sir, do you want me to rearrange the entire song? And as you said, and he came back to me and said, I do not want to interfere in the creativity of so many intellectual minds who are in a process of creating a content like this. So rather than me giving a suggestion, I'll probably do my narrative back again and not let anything change. So मुझे वहां से एक चीज समझ में आई कि the biggest inspiration institution within himself, everybody looks up to, सो when he can be this grounded, तो हम लोग तो मैम अभी कहीं है ही भी नहीं, नहीं है। मतलब वी आर nowhere. And I'll tell एब्सोल्युटली। you, जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं ना रश्मि जी, after every success and glory, there's another target on your shoulder to prove back again. सो ट्रू, सो One good ट्रू। film, yeah, one good film, superb. या One bad film washes out everything. यस। So, I don't think there is an end to success, but what is more important is that the interaction which you and me we are doing today. If this goes all well and we establish a connect within, uh, with with the viewers watching यस। us, and if even 1% audience and people who are interested in getting into this industry get something out of it, our purpose of this interaction is sorted. So that is something which we need to live for, ma'am, and that is something which gives us more happiness than having thought over a lot of feathers in your cap and walking down the streets. Because I remember an interview of Bob Marley, one of the biggest successful artists. uh, so he pretended that he's no more in this world, and ओके। then someone uh, found him after 20 years sitting on the roads and had an interaction with him. And somebody asked him that, you never thought that you needed a lot of money. हम्म। So he said, what is a lot of money for you? For me, a lot of money is a peace during a day, and a peace which makes me sleep peacefully. सो So there ट्रू। is no end to where we want to head, ma'am. We have to put a full stop. We have to decide that what is that which gives us happiness. Happiness is educating people, एब्सोल्युटली। getting a lot of people together. That is what life is, which I think it should be. सो ट्रू एंड वेल सेड वरुण। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करने के लिए, और हमारे व्यूअर्स आज बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। आई एम गारंटीड ऑन दैट। इट्स रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू। सो मुझे एक बात बताइए कि जो आपने गुजर जाएगा आपका जो है वीडियो, उसके लिए आपने जो प्लानिंग की, जो कास्टिंग थी, एंड हाउ यू थॉट कि अमिताभ जी को मुझे लेके करना चाहिए, इट वाज ब्यूटिफुली डन एंड इट्स सो इंस्पायरिंग। आप जब उसे सुनते हैं, सो इस वक्त में आपने बहुत लोगों का, कहते हैं ना, एक मनोबल बढ़ाया है। बेसिकली दैट्स व्हाट यू हैव डन, एंड थैंक्स टू यू एंड हैट्स ऑफ टू योर वर्क। इट्स अमेजिंग, एक्चुअली फैंटास्टिक। एंड व्हाट अ कास्ट यू हैव, वेरी नाइस। सो हाउ इट हैपेंड, Again, उसके बारे में बताइए। इट्स ऑल अ ब्लेसिंग। मुझे आज भी याद है कि 26 मार्च को मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जाजिम शर्मा, वाज एन इनक्रेडिबल म्यूजिक कंपोजर। आई थिंक उसके जितना टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर आई थिंक इस दुनिया में तो नहीं है अभी। तो मेरी और जाजिम की कॉन्वर्सेशन हो रही थी, और फिर मैंने और जाजिम को बोला कि जाजिम चल एक गाना बनाते हैं लॉकडाउन पे। और उसके बाद सिद्धांत कौशल जो बहुत बहुत ही अच्छे राइटर हैं, जी।
उनसे बात हुई तो हम तीनों ने मिलके एक थॉट ब्रेनस्टॉर्म किया। मेरी ही बिल्डिंग में मेरे एक फ्रेंड रहते हैं, जय वर्मा। जी। हम चारों लोगों ने मिलके एक थॉट को ब्रेनस्टॉर्म किया। उस थॉट को ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद हमें ये पता लगा कि आज लोगों को यही नहीं पता कि ये लॉकडाउन कितने दिन चलने वाला है। पहले 1 दिन का लॉकडाउन हुआ था, फिर 10 दिन का लॉकडाउन हुआ। 31st March was supposed to be my birthday. ओके। और and I wanted to celebrate this year my birthday. I wanted to do a massive party. ओके। सो अचानक से लॉकडाउन हो गया तो मुझे यही नहीं पता था कि अब हम क्या करेंगे। जी। सो दिस एंटायर थॉट, व्हेन वी वर टॉकिंग टू पीपल, पीपल सेड दैट हम लोग हम लोग घबराए हुए हैं, हमें नहीं पता कि हम कितने टाइम जिंदा हैं। तो आई डोंट नो, देयर इज नोबडी हु इज टेलिंग अस व्हाट इज द ट्रूथ। हम ये व्हाट इज कोविड, व्हाट इज कोरोना, ये इतने लोगों को मार रहा है, और ये सब बातें हो रही थी। वी थॉट ऑफ स्प्रेडिंग assurance, हम्म। hope that this too shall pass. तो सिद्धांत ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी। बिन कहे कभी ना कभी हकीकत लेती है इम्तिहान, पर खरे खरे गुजरने की नसीहत देती भी तो है। हाँ, उधड़ा जो पड़ा साहस ये सिल जाएगा, देखते ही देखते राह से तो खिल जाएगा, गुजर जाएगा। गुजर जाएगा। एंड आई शेयर्ड दिस थॉट with one of my friend. She's she's one journalist and a very close friend and an inspiration to a lot of people. वो IBN 7 पे एक शो करती थी, जिंदगी लाइव, जो बहुत बड़ा शो है, और मैं उनका मतलब लास्ट 2 डेकेड से मैं उनका फैन हूँ। तो मैंने उनके साथ ये गाना शेयर किया कि दी दिस इज समथिंग विच आई एम डूइंग, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वी शुड डू ऑन दिस। तो ये मैंने उनको 1 तारीख को गाना बन के आया था मेरे बर्थडे के नेक्स्ट डे, मैंने शेयर किया। और 2 तारीख को मनी हाइस्ट आया था, तो मैं पूरी रात मनी हाइस्ट का सीजन 4 देख रहा था। और जब मैं 3 तारीख की सुबह उठता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे कॉल्स हैं, मतलब बिकॉज मैं सुबह 6 बजे सोया था। एंड शी कॉल्ड मी एंड सेड, डू यू नो दैट बच्चन साहब इज ट्राइंग टू कॉल यू एंड यू हैव मिस्ड हिज कॉल्स। आई सेड, यार प्लीज मेरे साथ मजाक मत करो। वाह। बोलती है, आई एम नॉट किडिंग, बच्चन साहब इज ट्राइंग टू कॉल यू। एंड I went to my messages. I saw that there is a message from Bachchan sir. वाह। And I had 3 missed calls from him. और मेरे हाथ कांप रहे थे. I was आई shivering. नो। I was shivering that, oh my God, one of my biggest days of my life. And I missed it. मुझे नहीं पता था कि सर से मेरी वापस कभी बात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मैंने उनको कॉल बैक किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो मैंने उनको मैसेज किया, सर आई एम सो सॉरी दैट आई मिस्ड योर कॉल, एंड आई कैन आई प्लीज कॉल यू बैक। और जैसे ही वो मैसेज गया, सर का फोन आ गया। सो the only way the only person I think I'll thank for making this possible is Richa Niruchi, because आजकल लोग ना सेल्फलेस जेस्चर्स करते नहीं है। मतलब आप सोचिए कि मैंने उनसे बोला भी नहीं था बच्चन साहब के लिए, उन्होंने गाना सुना, उन्होंने बच्चन साहब को मेल किया कि वन ओके। ऑफ माय फ्रेंड हु इज लाइक अ यंगर ब्रदर वाह। is doing something like this. Sir, I think it'll be great if somehow you can be a part of it. ऑसम। And this happened, and then slowly, gradually, 115 artists became a part of it. आई नो। 51 artists, 51 singers have sung it, which is for the first time in world history यस। कि 51 singers ने after This Is It of Michael Jackson के बाद वो गाना गाया है। या। So I feel blessed that that somewhere जो करोड़ों अरबों लोग, जो 600 करोड़ लोग जिस इस ग्लोब में परेशान थे, हमारी इंटेंशंस बहुत साफ थी कि हम एक अच्छा कंटेंट करना चाहते हैं, और हमने वो कंटेंट किया। एंड आई थिंक वो उस कंटेंट ने अपनी जर्नी खुद जी। बिल्कुल। एंड इट हैपेंड, It द is बेस्ट थिंग। so nice, जैसे amazing, and I really love this is I मतलब I can't say this is your best work, but मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा because इस दौर में जो आपने ये कार्य कर दिया है, it's like forever you have created a history, inspiring so many, जिससे एक आपको एक उम्मीद कहते हैं ना, एक आशा की किरण दिखाना बहुत बड़ी बात है वरुण। तो आपने वो किया है और पूरे विश्व के लिए किया आपने। एंड अमिताभ जी इज सच अ पर्सन, you really want to listen him. He's amazing, he's a legend. So he's like everybody loves him, and आपने उनको लेके तो कहते हैं ना
सोने पे सुहागे वाली बात कर दी है। अमेजिंग, लाइफ की सबसे बड़ी ब्रिलियंट चीज वर्क। हो गई। या आई रिमेम्बर मैं छोटा था तो मम्मी को बोलता था कि एक बार ना उनको देखने जरूर जाऊंगा, जी। बिकॉज आई बीन फ्रॉम साउथ हिंदुस्तानी टिल बदला, आई हैव सीन एवरीथिंग. ओह, Okay. okay. And trust me, I feel so blessed and lucky that still today also, when I text him, I get a reply back from him. Wow, so So it nice. was a challenge, रश्मि जी. जब जब गाना रिलीज हुआ तो सर ने, जिस दिन गाना रिलीज हुआ था उस दिन शेयर नहीं किया, तो हम लोग बहुत परेशान हो गए जी। कि ऐसा क्या है जो हम मिस आउट कर गए, क्या सर की कोई हमने बात नहीं मानी. हम्म। एंड आई वॉज वेरी वेरी वेरी, यू नो, मतलब वेरी कंफ्यूज दैट व्हाट या। हैपेंड. अचानक से 11 मई को हमने रिलीज किया था और 12th मई की मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप, द वर्ल्ड स्टार्टेड कॉलिंग मी बिकॉज, यू नो, बच्चन साहब कॉल्ड मी, ही सेंट मी एन ईमेल. And that email itself, Rashmi ji, is everything for me. I've framed it and I've kept it in my house because to get an opportunity to work with him and to work with him this closely, uh, लोग ना लोग अपनी जर्नी शुरू करते हैं एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर. दे they struggle to get actors. Yes. Okay, imagine if your journey start with somebody like him, Yeah, you're sorted. of course. So it's been a commendable learning process from him, and I think everybody in this world should learn to be humble Yes. after achieving everything, because what you have reached and learned, because getting everything, then losing everything, and then building back up again everything, इंसान जो खोता है ना उसको हर एक चीज की इंपॉर्टेंस पता होती है. एंड ही, Okay. I think he's the best person. I think everybody should learn from. Amazing. So nice to know. Even I'm enjoying it so much as I have been part of the whole thing. It's so nice. And of course, it's like a dream come true. And I can really imagine how happy you must be at that moment. और इतनी अच्छी अच्छी आपके पास जो ये यादें हैं हो गई हैं अब इस के दौरान इट्स लाइक अ मेमोरी यू विल गोना चेरिश फॉर एवर. इट्स सो नाइस. एंड आपका अच्छा काम जब उसका रिजल्ट आता है तो एक अलग ही खुशी मिलती है. एंड हार्ड वर्क पे ऑफ, दैट्स व्हाट इट इज. ब्यूटीफुल. Yeah. सो आप लिखते भी हैं वरुण. आपके बारे में तो बहुत कुछ है हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए. मुझे ऐसा पूछना चाहिए ऐसा क्या है जो आप नहीं करते. Uh, या. मैम, जब जब खुद चीजें बदलनी होती है ना और खुद चीजें बनानी होती है, तो आपको अपने सारे रिसोर्सेस खुद करने होते हैं. तो मैंने लिखना सीखा. मैं बहुत गलतियां करता था और धीरे धीरे गलतियां करके सीखने लगा. फिर मैं पोइट्रीज लिखने लगा. फिर मैं ऐसी कुछ कुछ हाथ से लिखने लगा. फिर मैं फिक्शन में कुछ लिखने लगा. तो मैं धीरे धीरे करके मुझे समझ में आया कि यू नो आई यू लर्न विद द प्रोसेस. तो जब आपके पास बहुत कुछ नहीं होता तो फिर सब कुछ आप बनाना चाहते हैं. सो आई गॉट इनटू दैट प्रोसेस एंड आई थिंक आई स्टार्टेड नोइंग हाउ टू राइट. तो मैं धीरे धीरे कुछ कुछ लिखता हूँ. तो हाँ, लिखने लगा. एब्सोल्युटली. सो अब आपने जो भी लिखा है हम ऑन स्क्रीन देख पाएंगे उसे. 100% मैम, 100%. सो हमारे 100%. व्यूअर्स के साथ भी शेयर करिए व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और आपने जो लिखा है उसे हम कब देख पाएंगे ऑन स्क्रीन. सो मेरी एक फिल्म है द लास्ट ट्राइब, जो मैंने लिखी है. और उस फिल्म पे मैं काम कर रहा हूँ और मोस्ट प्रॉब्ली इफ ऑल गोज वेल, मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए वो फिल्म नहीं करना चाहता था. आई वांट टू डू दैट फिल्म फॉर अ 70 mm स्क्रीन. दैट इज व्हाट द विल एंड अ विश इज. तो एज सुन एज आई एम फिनिश माय ड्राफ्ट्स, तो 100% वो जरूर सामने आएगा. और दैट विल बी माय फर्स्ट प्रोजेक्ट व्हिच विल बी कमिंग एज अ फीचर फिल्म, व्हिच everybody will be able to see it as a writer and a director. और अगर कोई और प्रोड्यूस नहीं करेगा तो फिर प्रोड्यूस भी मैं खुद करूंगा. So फैंटास्टिक. ऑल that's what it सेट. is. फैंटास्टिक. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आपके प्रोजेक्ट्स जल्दी आए हम ऑन स्क्रीन देखें बिकॉज आपका काम हमारे सब व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगा भी है और लगेगा भी. मुझे पूरी उम्मीद है बिकॉज आप अपना बेस्ट देते हैं अपने काम में. आप सीन यू एंड यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड
very dedicated. और आपने अपने experience से जो भी आपने सीखा है, that's what is coming up now. And experience always matters a lot, and you are very focused at what you want, and you hit where, like, when the iron is hot, that's what I should say. आपको पता है कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट कब पिक किया जाए, गुजर जाएगा is a proof of that thing. And we are so proud of you, Varun. Amazing. So Varun, मैं Thank you. चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आप यूएसए कब आ रहे हैं, बिकॉज आई हैव मेट यू हियर इन यूएसए. सो अब आप कब आ रहे हैं और हमारे व्यूअर्स के लिए क्या स्पेशल लेके आने वाले हैं? अगर ये सब चीजें ठीक चल रही होती तो आई वुड हैव बीन इन यूएसए इन अक्टूबर, because there was something which I was supposed to shoot for one of the designers in Chicago. Mhm. जिस पे हम बात कर रहे थे. और otherwise ये जैसी चीजें ठीक होंगी, I think the best thing is that I'm going to be there for a good amount of time to explore myself and to explore the possibilities of working in that side of the world, because I don't want to restrict myself just to the Bollywood scenario. I want to Yeah. explore myself to the international cinema. I want to go and approach a lot of production houses there, where I can present my scripts, the other kind of scripts which I have, because जो बहुत सारे realistic thoughts हैं और realistic films जो जो बायोपिक्स हैं, तो अगर इंटरनेशनल लेवल्स पे अगर होंगी तो वो बहुत अच्छा होगा. तो बाकी तो the people I'm talking to right now, you guys are the best people to bring in people from India. तो मुझे आज भी याद है, मेरी बहुत अच्छी एक फ्रेंड है कीर्ति राठौर. Yeah. She in Jaipur, Rajasthan. So we've been a great help to each other whenever she wanted something in Bombay. So I've always been there because of, I think हमारा एक ग्रुप भी था जो हम लोग इंटरेक्ट कर रहे जी थे. बिल्कुल बिल्कुल. तो तो आई थिंक अब आप लोग के साथ ही कुछ ना कुछ किसी चीज में जल्दी मुलाकात Of होगी. course, and Kirti is very strong pillar of my dream, and she's very close Right. to me. She's like my sister. So Mhm. we are connected well, and she is a very talented person. She's a very well-known designer, and she was here for New York Fashion Week, and I'm very proud of her. And thanks to her that because of her also we were connected, और आपसे मिलना मुलाकात हुई, मिलने का मौका मिला हमें, and it is so nice Definitely because yeah, Gaurav Vasudev, I जी. guess, Gaurav, we हाँ got जी. connected, and then Yes. this is all that happened. Yeah. दुनिया बहुत छोटी है, दैट्स व्हाट इट इज प्रूविंग. एंड आजकल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसने तो और भी हमें आई थिंक सो सबको बहुत पास ले आए हैं. दैट्स व्हाट इट इज. यू डोंट फील कि यू आर वेरी फार अवे फ्रॉम एवरीवन. सो यू फील यू आर लाइक अ फैमिली एंड यू आर मीटिंग एवरीवन. बट ऑनलाइन एटलीस्ट मुलाकात हो सकती है. वी हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग फॉर नाउ एंड होपफुली वक्त जल्दी चला जाए. सो बिफोर वी एंड दिस शो, वरुण, एनी मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स? I think, what, guys, just believe in yourself and live every single moment as it is the best moment of your life, and it's the learning moment of your life, because हर वो चीज जो हमारी जिंदगी में हमारे सामने आती है, वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है. और हमेशा याद रखिए, nothing is over till we say it's over. So even if you're going through the worst of your time, understand that the moment it's gonna pass by, the best of it will start. So Yeah. cherish every beautiful aspect of your life, and smile, and bring a smile to people, because if you can do that, तो किसी और की मुस्कुराहट बनने में, कई बार जिंदगी में जो खुशी है ना, वो खुद के लिए नहीं होती. तो live for yourself and live for the best, live for others, be a smile, and this too shall pass, and will all be to a better 2021. That's it. That is something which I have to say for now. थैंक यू सो मच वरुण. एंड आपने जो मैसेज दिया वो भी यही है कि गुजर जाएगा. एंड आई टेल ऑल माय व्यूअर्स कि आप लोग जाइए और देखिए यूट्यूब पे गुजर जाएगा, एंड यू विल लव इट. ब्यूटीफुल वर्क, एंड थैंक यू सो मच वरुण, एंड गुड विशेस फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक्स. All the best. मैं हूँ रश्मि बेदी. हमें उम्मीद है ये शो आपको पसंद आया होगा. लेटेस्ट वीडियो के लिए देखते रहिए माई ड्रीम टीवी यूएसए,
और पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स